Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अभिमन्यु. Ma'am, the fizzing will occur more vigorously in HCl as it is more reactive than CH3COOH. You are right, but you're not using the right words. It should not be reactive. HCl is stronger acid and acetic acid is a weak acid. So which one is having more hydrogen ion concentration? Which one is having less hydrogen ion concentration? Yes, Samriddhi. In test tube A, the fizzing occurs more vigorously because HCl is a strong acid which gets completely ionized, forming more H plus ions, and hydrogen ions burns with pop-up sound. Do we need to tell? Yes, it burns with nine. We need not to tell the pop-up sound. We need not to test the. If they are asking about the fizzing, and fizzing is the effervescence, the bubbling which is produced due to the evolution of gas. So we are not bringing any burning candle over here. Everything went very well, but the closure was wrong. Understand what the question is asking you for. Not asking you for the hydrogen gas test, asking you for the fizzing. That is bubbling up. Yes, Okay. Shweta. Yes, ma'am. In HCl, fizzing occurs more vigorously because it is a strong acid and hence will produce more hydrogen ions in water. Very good. So here, children, you need to compare the strength of the two acid. So here in one of the test tube, we are having HCl, which is a strong acid, mineral acid, whereas acetic acid is a weaker acid. So which one is having more amount and concentration? So concentration of hydrogen ion किसमें ज़्यादा है किसमें कम है? It is more in HCl, less in Letting acetic acid. Make a table. Make a tabular form quickly, children. Table बनाओ चलो. Write down in the comparative form. Table बनाओ. In one column you can do write HCl and in another column you must write acetic acid. Ma'am, do we have to also give chemical equations? You may give. You may give. Okay. So HCl is a mineral acid. This is organic acid. Ma'am, Yes, beta. now what is the difference between a mineral acid and an organic acid? Beta, we have discussed it very well. Mineral acids are corrosive, they cannot be consumed. Organic acids are non-corrosive, they are weaker acids, can be consumed. We have done a list of organic acid, the tartaric acid, your oxalic acid, malic acid, carbonic acid. Here organic doesn't mean the bio wala organic. ठीक है सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते जैसे एसिटिक एसिड नेचुरल रिसोर्स नहीं है राइट कार्बोनिक एसिड नेचुरल रिसोर्स नहीं है सो डू नॉट गेट पजल्ड कि ऑर्गेनिक मींस कि इट इज द टोटली यू आर गेटिंग इट फ्रॉम एनी वेजी और फ्रूट here organic means the consumable acid the weaker acid is it clear Yes, ma'am. so this is weaker acid लिखेंगे फिर आप लिखेंगे यहाँ पे more hydrogen ion concentration H plus concentration यहाँ पे less H plus concentration मेरे टैब में मीटिंग ऑन कर सकते हो साथ में समय में प्लीज so more hydrogen concentration means
Amount of Completely. hydrogen, yes, more amount of hydrogen gas evolved, less amount of hydrogen gas evolved. Likho, add on 1 point. More H2 gas evolved. Less H2 gas evolved. So अब last में in which test tube will the fizzing occur more vigorously? Close it with the last point. HCl. Yes. More fizzing. My handwriting goes bad here because of lack of space, but I hope everyone can manage. Less fizzing. Is my screen not shared with you all? Are we clear? Have we understood? Look, we have given the conclusion and the above points are stating the reason very well, and teacher will be able to understand that you are clear with your concept and you have articulated your answer in a right way. Are we clear, children? Yes, ma'am. Now, Yes, what ma'am. can be the supporting reactions, children? It is very important. Like Samriddhi said, ma'am, can we give the reactions? Of course, yes, children. Like in the HCl wala, yes, Mohak, you want to answer? Can I give the reaction? Yes, please. Mg plus 2HCl forms MgCl2 plus H2. Gives MgCl plus Mg. MgCl2 plus H2. Very good, very good. Samriddhi, you want to give the another reaction? Second one, Yes, ma'am. please. CH3COH plus Mg. पहले Mg. लिखेंगे, पहले metal plus acid. उल्टा नहीं करना. Metal plus acid gives salt and a hydrogen. Okay, ma'am. Good. Mg plus CH3COH gives MgCH3CO whole twice plus H2 gas. Okay, क्या mistake हुई है समृद्धि से? इसकी mistake मैं भी लिखते गई. What is the mistake? What is the error? Who will tell me? Ma'am, Mg should be stated last. Yes. Whenever we are working with acetate ion, it is always placed first. This is the only anion which is placed first. So CH3COO whole twice Mg plus H2. Anyone having difficulty with this formula or are we working well? अपना फोन दे दो मुझे. वो दे दो फोन दूसरा वाला जल्दी. वही तो चल रहा है मुझे. ठीक. Done, children. Yes, ma'am. Yes. All Yes, right. ma'am. All Yes, right. ma'am. The fresh milk has pH of 6. ठीक है? We have a fresh milk जिसका pH कितना है? 6. How do you think pH will change as it turns into curd? Explain your answer. Yes, Ankita is raising hand. When milk turns into curd, the pH decreases below 6 because lactic acid is formed and the curd becomes more acidic than the milk. Very good. Very, very good. So here we are comparing the two components. One is curd and one is milk. So milk is rich in lactose sugar, whereas storing of milk causes the lactose sugar to turn into acid. Lactic acid, ये words use करने हैं, right? It turns into lactic acid. So it drops down the pH from 7 to 6. Okay, those who are raising hand, can I ask the next question? Is it clear? You're going to compare the two things. Which all two things you're going to compare? Milk and sour milk. Curd.
Yes, milk and sour milk. Milk and sour milk matlab, which is sour milk, children? Which is sour milk? Arnav, करके answer. Curd. 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 Right, children. Ma'am, curd. Yes, Ma'am, sour milk curd. is curd. जिन बच्चों को confusion होता है वो बच्चे लिखेंगे. There is no harm in learning at any point. There is no harm at all. Write down. So next, we have discussed this point, right? We have discussed this question. This was there in my PPT as well. So milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH? I've given this question in the test also. Have you all attempted? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? Ojas, can you answer? He's frozen. Hardik? Yes, ma'am. Ma'am, the milkman adds a small amount of baking soda to fresh milk to move its pH to slightly alkaline so that it takes a longer time to form into curd and the milk would stay fresh. Yes. Can we put it precisely to delay the thawing of milk? Can we put it more precisely? Yes, ma'am. It delays the thawing of milk. Everyone, please write down this line. Shivika, you want to answer? Second part. Why does this milk take long time to set as curd? Shivika, I'm waiting for you. Ma'am, I want to answer for the first part. Why you can't answer for the second part? Yes, Mohak. When the milk sets to curd, the pH decreases, it becomes more acidic, and in the presence of alkali does not allow it to become more acidic easily. Hence, it will take more time to set as curd. You have given me answer for the first one. I'm asking for the second one now. Mama, I have given for the second one. Why does the milk take longer time? ऐसे दोबारा बोलो. I think I have misunderstood anything. Gitika, When stay the mil- focused in the class. when the milk sets to curd, the pH decreases, it becomes more acidic. In the presence of alkali, it does not allow it to become more acidic easily. Hence, it takes a long time to set as curd. Yes, children, the pH has gone alkaline, so it is taking time to go acidic from the alkaline medium. Next, Vachi, can you answer me this question? Plaster of Paris should be stored in moisture-proof container. Those who are not raising hand, that means they have not done. Why we are failing to participate? Why only few hands are raised? Chitrangsha, answer me for this question quickly. Written plastic of the Paris should be stored in a moisture-proof container because it reacts with moisture and change into hard gypsum. Hard gypsum. Plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container. Upon gaining moisture, it changes its properties, right? It turns into gypsum, which is a hard cement-like substance. Very good. So, do children tell me, do we need to give the formulas to support our answers? Quickly tell me. Yes, ma'am. Yes, Can you ma'am. give the formulas? Yes. CSO4 dot Yes, ma'am. half H2O. POP is, yes, calcium sulfate CSO4 dot half hydroxide. H2O. Yes. And what is gypsum? And Yes. CSO4 Yes, half 4 of dot H2O. H2O. Next. What is neutralization reaction? Give two examples. Give two examples. I have so many hands. I'm okay. Okay.
यस अभिषेक, आप दीजिए बेटा। A neutralization reaction is a chemical process where an acid reacts with base to form a salt and water. Neutralization reaction is a reaction in which acid reacts with the base to form salt and water. Has he given the justification? Has he given the justification? Neutralization reaction. Why it is neutralization? It is important to tell along. Ma'am, as the water is forming and a neutral salt is also obtained. यस फॉर्मिंग बेटा हम अपनी इंग्लिश सुधारेंगे क्योंकि फिर हमारा साइंस का पेपर गड़बड़ हो जाएगा। और बताओ, इसमें साथ में एक सब रिएक्शन चलता है, एक आप एसिड प्लस बेस दिखा दोगे। और ये ध्यान रखना, जब भी आपको अगर स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स का, तो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेना या फिर वीक एसिड वीक बेस लेना। यस परियुल बोलो बच्चा, यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग? Ma'am, I would like to give the equations. अच्छा चलो बोलो वन एग्जांपल। Ma'am, sodium hydroxide plus hydrochloric acids gives sodium chloride with water. फॉर्मूला बोला कर, फॉर्मूला NaOH plus NaOH plus HCl gives NaCl plus H2. ठीक है, और एक वीक एसिड वीक बेस का प्रांजल चलो बताओ, आज इसने हाथ खड़ा किया, मैं सुनो इसे। प्रांजल दत्त, वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल दे बेटा फटाफट। जल्दी दो बेटा, होल क्लास इज वेटिंग। हु विल गिव मी एग्जांपल? गीतिका आप दो, जल्दी दो। Ma'am, can I give? वेयर आर दी? व्हाई नॉट डियर, वी आर Ma'am, प्रैक्टिस। एक मिनट रुक ma'am, जा। when we will take acetic acid and calcium hydroxide, we will get calcium acetate plus water. Yes. In a pond, bigger sharks eat the smaller fishes. This is what is happening in the class. If you will not voice out, you will not be able to get the chance. One more example. Aradhya, chalo bolo. CH3COOH with NH3, we get CH3COONH4, which is aqueous, so that's with water. गलत बोला इसने, दोबारा बोलो। CH3COOH plus NH3 gives us NH3 is CH3. ammonia gas. NH3. NH3 is ammonia gas. May I give the last one? Yes. हाँ Can I? यस बोलो, रोजस बोलो बेटा, आपका पहले नेटवर्क इशू था, आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। Ma'am, CH3COOH plus MgOH whole twice. हाँ प्लस MgOH होल ट्वाइस। कोई भी वीक एसिड ले लो, वीक बेस ले लो ना, जैसे हार्दिक ने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ओजस ने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डालूं? क्या डालूं? No, ma'am. कंप्लीट करो। CH3 अमोनिया नहीं होगा। इफ यू नीड टू से आराध्या, दैट शुड बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। That must be ammonium hydroxide is the base, not ammonia. Ammonia is a gas. Is it clear? Yes, ma'am. चलो give, हाँ जी बेटा बोलो। Ma'am, can we give CuO plus HCl gives CuCl2 plus water? CuO को नहीं बोलोगे, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड नहीं बोलोगे, दैट इज ब्लैक इन कलर।
और क्या बोल रही हूँ मैं, दैट इज नॉट, जब व्हेन यू आर गोइंग टू डिसॉल्व इट इन वाटर देन दैट एक्ट्स एज अ बेस, alkali. हाइड्रोक्साइड को लोगे बेटा, रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ दिखाना है, क्योंकि मेजॉरिटी में हम क्या बोलते हैं, ऑल द बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयंस इन कॉमन. आर वी क्लियर? Okay, ma'am. Now last question is left, children. Give 2 important uses of washing soda and baking soda quickly. Ankita is raising hand. It is used as a cleansing agent and also used in Yes, manufacturing this of cleansing glasses powder. and paper. Very good. Or baking? And it is used as an antacid to neutralize stomach acidity and also in soft drinks to give a fizzy effect It gives the fluffiness by to the producing. cooking substances. बोलो बोलो, अपनी बात पूरी करो, क्या बोल रहे हो, बोलो. Also used in soft drinks to give a fizzy effect by producing CO2. By producing Cl2. Is it right to say? And CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide. I misheard it. Okay, children. So with this we have completed our NCRTs. Are we all clear? Be ready. अब मैं किसी से भी पूछने वाली हूँ. So is my screen switched? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Just give me 1 second, children. 1 second. Now, children, let us begin. The very first, what happens when a solution of an acid is mixed with the solution of a base in a test tube? Ryan, quickly. Lower करते जाएंगे. Ma'am, the temperature of the solution increases and the salt formation takes place. Temperature of the solution increases and the salt formation takes place, right, children? So whenever neutralization reaction, the temperature increases. This is true. This is false. It doesn't remain same. Again, false. This is true. So option D. Now next, Arnav, quickly. An aqua solution turns. Hand low करेंगे Ryan. जिसकी chance होती जाएगी, lower your hand. I'm option D, hydrochloric acid. Okay, let me read. An aqua solution turns red litmus solution to blue. Excess of hydrochloric acid, red to blue, okay. Excess addition of which of the following would reverse the change? रेड टू ब्लू जा रहा है तो वो बेसिक है, तो किसका एडिशन रिवर्स करेगा, मतलब ब्लू टू रेड कर देगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक Hydrochloric acid. राइट चिल्ड्रन, क्योंकि बेकिंग पाउडर भी एक बेस है, लाइम वाटर एक वीक एसिड है, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, तो यू हैव टू ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वेरी गुड. लो योर हैंड नाउ. Advik, we are moving. Next is your turn. Let me reach there. During the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in a guard tube is to, हमने किया था ये question. Yes, ma'am. The role of calcium chloride is to, very simple. Ma'am, may I tell? Sanvi, Yes, ma'am. बोलो. Ma'am, deabsorb chlorine ions from the evolved. No. May I tell? Ma'am, can I tell? Absorb moisture. It absorbs moisture. Ma'am, may I tell? अच्छा, may I tell की बजाय आंसर बोल दो सब अनम्यूट करके. Ma'am, It option absorbs C. Absorb moisture from the gas. Absorb moisture Yes, from the yes, gas. yes. Ma'am, option C.
Yes, children, the role of calcium chloride in a test tube is to absorb the moisture from the gas. Second time कर रहे हैं, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है. Sanvi, it's not for the chloride ions. It's absorb moisture from the gas. Which of the following salts does not contain water of crystallization? किसमें water of crystallization है ही नहीं? Okay. Baking soda. So please. Baking soda. Option B. Baking soda. B, baking soda. Right. अच्छा मुझे बताओ. अच्छा अब blue withdrawal में कितने water of crystallization है? How many water molecules are there? Blue withdrawal. Arya. Lost it. Shrishti. Blue withdrawal में कितने water molecules हैं यार? Blue withdrawal is copper sulfate. Baking soda. अरे I'm not asking. 7. Wrong. Ma'am, Four, 5. four, Ma'am, five. 5. 5. Ma'am, 5. नहीं पढ़े. Yes, this is लिखो वहाँ पे. Blue withdrawal is CuSO4.5H2O. Formula लिखो. Baking soda is NaHCO3. लिख के ही प्रैक्टिस होती है. Washing soda कौन बताएगा मुझे? Ma'am, it contains 10. Yes, formula Water पूरा. crystallization. Yes, Shreya, can you tell? मनस्वी, can you tell? मनस्वी, स्टैचू बन के नहीं बैठना, बस क्लास में आंसर भी करना है. What is the formula for baking soda? Baking soda, we have done washing soda now. Yeah, don't do this. नहीं, रुक जाओ समृद्धि, बहुत सारी चांस हो गई. Let me figure out everyone. Ma'am, can I tell? Who is this? Ma'am. Can I tell? Pariyul बोलो. Ma'am, it's Na2CO3 plus H2O. गलत. प्लस. Sorry, Na2CO3.10H2O. हाँ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. पता नहीं कितनी बार हम क्लास में बोलते हैं. मुझे ये चाहिए. किससे चाहिए? प्रांजिता, आंसर मी. जिप्सम. जल्दी जल्दी आंसर करें. CaSO4.2H2O. वेरी गुड. CaSO4.2H2O. तो किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? क्लियर, राइट इन फ्रंट ऑफ यू. Baking soda. Baking soda. NaCO3. सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है. अब सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ सृष्टि, आंसर करो. प्रिया, आप Ma'am, कर रहे हो. strong base. ऑप्शन बोलो 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 सृष्टि. या ये बोलते क्यों? Strong acid and strong base. Strong acid and strong base. Is it the May right? I tell? May I tell? याशिका, आंसर करो. Ma'am, D, weak acid and strong base. D, weak acid and strong base. Is she right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Calcium phosphate is present in tooth enamel. Its nature is. Calcium phosphate की nature क्या होती है? Basic. Basic. Say. Option It's a basic salt. कैल्शियम फॉस्फेट का मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा? आई विल अप्रिशिएट दैट चाइल्ड जो मुझे फॉर्मूला सही देगा. आराध्या. Ca2PO4. गलत. मोहा. CH3PO4 वेरी गुड. हु सेड दिस? C3PO4 whole twice. आई थिंक हंशुल. Yes. फर्स्ट हंशुल सेड ना. Yes. यस. क्या होता है? Ca2 plus PO4 3 minus. Go back to 9th class. Ca3
Bracket PO4 whole O4. twice. Twice. Whole twice. Right. Okay. Kritika, I'm not happy with you. You're not answering anything. Going blank. A sample of soil is mixed with water allowed to settle. A clear supernatant solution. Who will tell me what is supernatant solution? Ma'am, concentrated. No. Diluted. Dilute. No, it's not suspension. When we prepare a solution, sometimes few particles settle down at the bottom. And the particles which settle down at the bottom, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Sediment. And the particles which remain floating, in the solution are known as supernatant. And There is the colloid. तो सुपरनेटेंट सॉल्यूशन के पार्टिकल जैसे ट्रू सॉल्यूशन के सारे पार्टिकल्स हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, तो इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे बच्चा? सुपरनेटेंट सॉल्यूशन पार्टिकल्स. So supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this paper to greenish blue? So yellowish orange से हमें greenish blue में जाना ही हमने डिस्कस भी किया था. आद्विक बोलो. मैम मैंने एंटासिड. An antacid. Correct. Next, Archit, this is your turn. Quickly. Be ready. Which of the following gives correct increasing order of acidic strength? Low to high जाना है. जल्दी बता. Option A. Water to acetic to hydrochloric acid. Thumbs up. Very good. Next, Ajo. Yuvraj, are you ready? Yes, If ma'am. few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of a solution, what should be done? What should be done? Option D. Neutralize the acid with a strong alkali. बेटा मैंने ये हमने डिस्कस किया था, दोबारा से पढ़ो. Oh. Option B. Why option B? आरव बताइए why option B? जल्दी अनम्यूट करना, इतना टाइम नहीं लेना. Water will neutral. Water and sodium hydrogen carbonate will. Not from your hand. You're missing it. We discussed this very well in the class. Ma'am, may I tell? Wait, Kanika, let Kanika answer. Ma'am, because the sodium hydrogen carbonate is a weak base. You have to wash it with plenty of water to remove the acid, and then you have to apply the paste of sodium hydrogen carbonate, which is a strong base or weak base? Weak base. Weak base. Can we apply the strong bases? Can strong bases be? No, ma'am. No, ma'am, it will cause skin burn. It create more itching. They are not itchy, they are corrosive. Why? So you're saying they're itchy. They are corrosive. In option D, look the same, everything is same. But sodium hydroxide they are using. This is a strong base. Strong base. Yes. Sodium hydroxide वो corrosive है. So which one is the right one? Option B. B. चलो आगे. Sodium hydrogen carbonate. Let me figure out. Shriya, Vachi, let me check with Vachi. Vachi, answer this. Sodium hydrogen carbonate added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statements are true about the gas evolved? पहले true false करके करो.
Ma'am, option D. ऑप्शन डी, पहले मैंने बोला ट्रू फॉल्स करेंगे. डज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? True. ट्रू. Pranjal, Ma'am, why it is going to turn lime water milky? अनम्यूट करके आंसर करो जल्दी से. Why this statement is true? मैम क्या पूछा आपने? Why this statement is true? मैम क्योंकि इतना टाइम नहीं है बेटा, इतने में तो ट्रेन भी निकल जाएगी, एन अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी. कनिष्का, यू हैव नॉट आंसर्ड. अविरल आरव, रेडी रहना अब इसके बाद. प्लीज बेटा अनम्यूट करो और आंसर करो. व्हाट इज सो डिफिकल्ट? It turns lime water milky because the gas evolved is CO2. How can you make out that CO2 gas is evolved? Ma'am, because sodium hydrogen carbonate is reacted with acetic acid. So due to the presence of a carbonate, whenever any carbonate is reacting, it always evolves a carbon dioxide gas, and carbon dioxide is responsible for turning it milky. So this makes the statement true. Aradhya, coming back to you. It extinguishes the burning splinter. Is it correct? yes, ma'am. Why this is true? CO2, CO2 is not a CO2 is not supported on fire. so it will extinguish a burning splinter. Yes, CO2 doesn't support the CO2. Combustion. Yes, combustion. So this is true again. Pranjal, it dissolves in a solution of sodium hydroxide. Is it true? इसमें देखो बच्चा आगे पीछे हो रही है. ये लैपटॉप उठा के रखो अपने पास. सलोनी, टेक दिस लैपटॉप और देखो कौन कौन से बच्चे नहीं है. अटेंडेंस मैच करो अपनी and talk to their parents. Please, please. It dissolves in a solution of sodium hydroxide. Harshita, can we sit with camera on and answer? Mama, camera is on. No, dear, your camera is off. Mama, it's not. Is it going to dissolve, children? Ma'am, now is it on? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, it will form sodium carbonate and water. It will form sodium carbonate Carbonate and water. Yes. It has a pungent odor. Is it right? No, Oh, ma'am. ma'am. false. False. It doesn't have a pungent odor. So Option B. C is correct Option B. and this is false. इसका reaction लिखो चलो for practice. We have sodium hydrogen carbonate. Reaction हाथ से निकालो. Reacting with CH3COOH. Break it down. इसको break करो. Na plus HCO3 minus. Break it down. Acetate ion CH3 COO minus H plus. So what is this? It is going to Sodium carbonate no, and Ma'am, sodium acetate. Sorry, Sodium sodium acetate. acetate, water, and carbon dioxide. very good. Sodium acetate plus CO2 plus Plus water. Water. रिएक्शंस कर करके देखा करो. जितना ज्यादा चीजों को रिएक्शंस के थ्रू समझोगे उतनी केमिस्ट्री को लेके हाथ सेट होगा. उतना ही प्लीज डोंट कॉल मी चिल्ड्रन. बबिता इज नॉट अराउंड. Pranjal, talk to me directly. Shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we have this. Common salt, besides used in the kitchen, can also be used as a raw material. So for making washing soda, bleaching powder, baking soda, slaked lime, what? अब common salt किस किस की preparation में use होता है? Baking soda.
It is used in the formation of washing soda, bleaching powder, and baking soda. No, not bleaching powder. Washing soda and baking soda. Right. Washing soda Option and C. सोडा या फॉर्मूला लिखो सबके किसमें सोडियम आ रहा है सोडा इज Na2CO3 फॉर्मूले लिखो हाथ से चित्रांशा लिखो घूरना नहीं है सामने डोंट स्टेयर स्टार्ट राइटिंग ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बेकिंग सोडा इज NaHCO3 स्लेट लाइम इज CaOH whole 2 में सोडियम दिख रहा है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा सो दैट इज द आंसर सारी चीजें रूट से पकड़ के लेकर आया करो हर चीज को रूट से समझो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज एक कॉन्स्टिट्यूएंट Tartric टार्टरिक Tartric acid. Tartaric acid. यस चिल्ड्रन इट्स टार्टरिक एसिड लिख लो बार बार लिख लो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेकिंग पाउडर ऐसे करके लिखो बेकिंग पाउडर is equal to what is it? It is baking soda which is NaHCO3 plus an edible acid that is tartaric acid. Priya, can you not unmute and answer? बेटा मेरे को ना इसके साथ वो चाहिए चार्जर एक बार श्रेया से बात करो इज शी नॉट इन अ पोजीशन टू अनम्यूट एंड आंसर Ma'am, यस बेटा ma'am, what is the formula of tartric acid? tartaric acid is an edible acid organic acids के formula are not in your course so not required shall we move ahead लिख लिया सबने ये भूलना नहीं है बेटा Yes, ma'am. ये भूलना नहीं है वन ऑफ द पॉइंट अच्छा ये हमने कर लिया टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली द नेचर ऑफ द टूथ पेस्ट commonly used Basic. Basic. which of the following statements is correct about the aqueous solution of an acid or base Option D. Option D. Option D. Second and fourth. Ma'am, Option D. Second and fourth. Option D. everyone Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. okay let me check which of the following statement is correct about the aqueous solution of an acid or base इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एसिड और बेस को लेके जितना ज्यादा पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये तो फॉल्स हो गया False. पीएच उतना वीकर एसिड सही बात True. स्ट्रॉन्गर द बेस False. False. True. True. A1 and 4 1 and 4 किसमें है D option. B option. हाँ Ma'am, option D. Ma'am, option D. 2 and Second and fourth. correct children correct my bad Option second. No, option D. नहीं बेटा this is 2 and 4 option B 2 and 4 option B the pH of gases during digestion Less than 7. less than 7. yes less than Seven. Option. Less than 7. less than 7 which of the following phenomenon occur when small amount of acid is added to water Option B. Neutralization. B. Option B. Neutralization. Option B. Neutralization reaction. Dilution. Option B. First and third. Ionization and One dilution. and three. Ma'am, ionization and dilution. Option B. 1 and 3. Dilution. Option B. नहीं बेटा जी नहीं आयनाइजेशन ऑप्शन Ionization and dilution.
Ionization and dilution. Yes, ma'am. Right. Option B. Ionization dilution. Ionization and dilution. When small amount of acid is added to water. स्मॉल अमाउंट है तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोल सकते, सॉल्ट फॉर्मेशन भी नहीं बोल सकते। आयनाइजेशन हर रिएक्शन में होती है, कोई भी रिएक्शन बिना आयनाइजेशन के हो नहीं सकता। So we are left with 1 and 3 correct. So which is option B? Next आ जाओ. Which one of the following can be used as an acid base indicator? Vanilla essence. Vanilla essence. Vanilla essence. Vanilla essence. Right. कोई विजुअली इम्पेयर्ड होगा तो वो फैक्ट्री इंडिकेटर की तरफ जाएगा, तो वनीला एसेंस विल बी यूज्ड. Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? Lime. Option D. Lime. Lime. देखो मार्बल कुछ नहीं होता, मार्बल और लाइमस्टोन दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ये लिख लो. हाँ लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड. NaCO3. यस, दैट इज NaHCO3. तो इन तीनों में से किसी का भी डिकम्पोजिशन होगा या एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो CO2 तो इवॉल्व होनी है. नहीं करेगा, दैट इज लाइम. अब इसने लाइन क्लियर नहीं किया कि क्विक लाइम है या स्लेट लाइम, तो जब क्लियर ना हो तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्विक लाइम, दैट इज Ca. तो जिसके पास कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा ही करेगा. तो ये बात का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें लिखो. मार्बल इज ऑल्सो नथिंग बट लाइमस्टोन. मार्बल भी और कुछ नहीं होता है, ये लाइमस्टोन होता है. कनिष्का दिमाग इधर उधर बहुत जगह है. When I'm writing something on the screen, why you're not making notes? Why you're not making notes? Am I telling for myself? विधान कैमरा सही कर लो, नहीं तो मैं मीटिंग से रिमूव करूंगी. और सीधे बैठ जा. Now moving ahead. Which of the following is acidic in nature? Option A. Lime juice. Option A, lime juice. Lime juice. Okay, we have this question. In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up. Which among the following statement is or are correct? Bulb will not glow because I'm C, 2 only. Second only. Second only. Option C. डाइल्यूट NaOH है हमारे पास, नील आयरन नील है, आयनाइज होगा. बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब तो ग्लो करेगा क्योंकि आयनाइजेशन होगी. तो बल्ब विल नॉट ग्लो मतलब ऑप्शन 1 और 4 तो यही एलिमिनेट होगा. ऑप्शन सी. Third B. मैम थर्ड भी हो गया. भी हो गया क्योंकि ग्लो नहीं करेगा. सर्किट इनकम्प्लीट है, ये बात गलत है. सर्किट कंप्लीट है, सारे वायर्स कनेक्टेड हैं. तो ऑप्शन विल ग्लो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वो आयंस फर्निश करेगा. परफेक्टली फाइन. So only 2. Option C is correct. Are you able to answer these kind of questions easily, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, children. So this question may bother you. Which of the following is used in dissolution of gold? बताओ. Nitric acid. D. Nitric acid. Option D. Chloric acid. Option C. C. Those who are saying मुझे समझाओ, Ma'am? मैंने पढ़ाया नहीं. Ma'am, may I answer? Yes, Ankita. Ma'am, aqua regia is a mixture of concentrated HCl and nitric acid. कितने पार्ट्स कंसंट्रेटेड एसिड नाइट्रिक के होते हैं, कितने HCl के होते हैं? You're right, but partially right. Aqua regia is a freshly prepared mixture. लिखो. This is there in chapter 3.
बट इसमें क्वेश्चन आ गया तो आई एम गिविंग यू एक्वा रीजिया फर्स्ट इट इज अ फ्रेशली इमीडिएट प्रिपेयर किया जाता है freshly prepared mixture. Yes, it is a freshly prepared mixture of HCl and HNO3. Right? So इसका जो रेशो होता है that is 3:1 means you are going to take 1 part of nitric acid and 3 parts of hydrochloric acid. तो अगर आप 100 ml एक्वा रीजिया प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें 75 ml क्या होगा HCl. Yeah. और यस और 25 ml क्या होगा Nitric acid. that is HNO3 that is HNO3 so you should be knowing अगर आप कुछ जान तो आप पूरे तरीके से जानेंगे right you should be knowing everything इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी केमिकल इक्वेशन नहीं है बेटा ये एक फिजिकली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है इट डजंट हैव एनी रायन स्टे फोकस्ड इट डजंट हैव एनी केमिकल इक्वेशन द फिजिकली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ठीक है Ma'am, is any heat being produced? Yes, the two acids, obviously the heat is produced and that heat is responsible to take away the impurities. जब हमें whenever we gold, मैं आपको बताती हूँ basically होता क्या है. Whenever we go to the goldsmith, right? The jewelers to get our gold ornaments cleaned. So what do? They prepare a mixture of HCl and HNO3. Basically वो aqua regia freshly prepare करते हैं and they dip that ornament. अब वो जो impurities होती हैं वो भी clean हो जाती हैं but ये ऐसा मिक्सचर होता है कि जो गोल्ड है ना उसमें से गोल्ड पार्टिकल्स भी वो डिसॉल्व करके ले आता है तो इज इट एडवाइजेबल टू गो एंड गेट योर गोल्ड ऑर्नामेंट्स क्लीन No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसा कुछ करना हो तो यू हैव टू गिव अ थॉट ट्वाइस बिकॉज गोल्ड इज हाईली एक्सपेंसिव मेटल So one should not get their gold ornaments cleaned by aqua regia because along with the impurities it takes away a layer of gold. तो आप उसका अगर वेट भी मेजर करवाओगे तो यू विल फाइंड कि उसका वेट भी मिलीग्राम्स में रिड्यूस हो जाएगा व्हेन द गोल्ड ऑर्नामेंट इज डिप्ड इन एक्वा रीजिया सो इज एवरीवन अवेयर व्हाट एक्वा रीजिया इज ऑल अबाउट Ma'am, Yes, if ma'am. the gold which was left in the solution, can it be recovered? No, beta. It will be drained out. If you're going to dip it for very long time, it is going to take away a lot of gold particles. Then you may recover it anyhow. Okay. Yes, beta. ओजस बोलिए मैम इसका कोई फॉर्मूला होता है एक्वा का नहीं ये मिक्सचर है बेटा दो चीजों को मिला दिया जैसे हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये फिजिकली प्रिपेयर्ड मिक्सचर हो गया सिमिलरली HNO3 एंड ये एक मिक्सचर होता है ओके Okay, which of the following is not mineral acid? Everyone can Citric acid. citric acid. Which among the following इसमें से बेस कौन सा नहीं है? C2H5OH Ethanol acid. C2H5OH. Very good. अच्छा सुन लिया ठीक है मुझे बताओ C2H5OH बेस तो है नहीं तो ये है क्या? Alcohol. Is ethanol. Ethanol. Alcohol. Wonderful. Ethanol. Wonderful. So these two are strong bases. This one is weak base. And this is alcohol. अपनी बुक्स में पेंसिल से लिखते जाया करो छोटी छोटी चीजें आपको कहाँ हेल्प कर जाएंगी यू नेवर नो जिसकी नोट मेकिंग स्ट्रांग होती है ना उसके रिस्पॉन्सेज और मार्कशीट भी बहुत स्ट्रांग होती है जो बच्चा हर पॉइंट को नोट करके घर पे जाके रिवाइज करता है दैट चाइल्ड बिकम सुपरली इंटेलिजेंट ग्रेजुअली विथ टाइम which of the following statements is not correct अब देखो यहाँ पे ना खेल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में is का मतलब सिंगुलर statements या तो इसमें एरर है plural cannot come with an is as an auxiliary verb
all metal carbonates react with acid. तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से डील करना. All metal carbonates react with acid to give salt, water and CO2. क्या ये बात सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So this is true. All metal oxides react with water to give salt and acid. सारे False. metal oxides. False. 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 What is incorrect in this? इसमें गलत क्या है? It will react with acid and Need better. water instead of Salt and acid. water. Product inside. Right. Some metals react with acid to give salt and hydrogen. क्या ये बात सही है? True. Yes. True. Very good. Some non-metal oxide react with water to form acid. क्या कुछ True. non-metal oxide True. react हैं? True. 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 So which one is not correct? B. Option B. Option B. Right. Match the chemical substances in column A with their appropriate application in column B. सिद्धार्थ ये कहाँ बैठा हुआ है? Can you scroll down a bit? Now it is fine. Huh? Why you want me to scroll down? You people are not sitting with your books. What is it? Yes, ma'am. Ma'am, option C. I'm Sorry, C. sorry. Okay, bleaching powder is used for decolorization. ठीक है? Baking soda. जल्दी से बोलो. Antacid. 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 Baking soda. Preparation of glass. Preparation of glass. Sodium chloride. Production of Production of H2 and Cl2. Yes. Production of H2 and Cl2. Option C. C. A Option to C. B to 4. C to 1 and option C. Correct. मनस्वी एक भी आंसर नहीं देते हो. गीतिका एक भी आंसर नहीं कर रहे हो. बेटा दिस इज नॉट फेयर. शौर्य आंसर नहीं करना. प्रांजल ऐसे ना लाइफ बहुत हेल हो जाती है. जैसे आप पढ़ते हो ना बेटा. आपकी क्लास सामने चल रही होती है. आप पीछे आराम से काउच पे और जस्ट रेस्टिंग योर बैक एंड एंजॉइंग. मैम मेरे ना भी काफी टाइम से मेरी बैक में दर्द है तो मैं इसलिए लगाती हूँ पीछे. आप आंसर भी नहीं कर रहे हो. मैम मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज्यादा. कितने महीने तक मैं ये रीजन सुनूंगी? पता नहीं मैम. मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे करूंगी आपके साथ मैनेज. Equal volumes of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed. The pH of the resulting solution is checked with the pH paper. What would be the color obtained? Light green. Light green. Yellow. Light Yellowish green. Yellowish green. Yellowish green. C. Yellowish green. नहीं इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है ना. ऑप्शन ही नहीं है. Yes, ma'am. हाँ. रेड हो नहीं सकता. येलो रेड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड. येलो मतलब एसिड. येलोइश ग्रीन मतलब आ गया थोड़ा सा न्यूट्रल वाली साइड. ब्लू बेस वाली साइड चला गया. Yellowish Most suitable option is yellowish green. Which of the following is or are true with HCl gas is passed through water? It does not ionize in the solution. It is a covalent compound. False. False. इसमें गलत है. Option C. C. मुझे Option option C. second and fourth. Stop. Listen to me. I am not here just to discuss the answer. I want to figure out कि आपके concepts कितने clear है. Option A, B, C. पहले मुझे बताओ
कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट? क्या HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है? यस डियर, मुझे पता था ये गलती करोगे। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, ये बात तो सही, बट ये बात गलत है कि ये आयनाइज नहीं हो सकता। कोवेलेंट कंपाउंड आयनाइज होते हैं, तो ये आयनाइज हो सकता है। दिस इज करेक्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट इन दिस। इट आयनाइजेस इन द सॉल्यूशन। क्या ये बात सही है? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. True. It gives both H hydrogen and hydroxyl ion in the solution. क्या ये बात सही है? No, No, ma'am. No, ma'am. What is wrong in this? Hydroxyl ion. hydroxyl ion. Hydroxyl ion कौन सा होता है? हाइड्रोक्सिल आयन कौन सा होता है? जल्दी बताओ। OH माइनस। तुम आधी आधी चीजें क्यों पढ़ते हो? जब आप HCl को आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस, तो OH माइनस बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। विल इट फॉर्म? नो। It forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecules. True. False. True. True. Why false? Ojas. It will form H3O. Yes, H plus रिलीज हो रहे हैं, तो वो H plus जाके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वो True. हाइड्रोजन बनाएंगे। H3O. So this is also true. True. C. Option C. Analyze the situation and then answer. You don't know what is going to come in your exam. Which of the following statement is true for acids? Option C. Option C. Option C. Sour and change blue litmus to red. एसिड बिटर तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन ए और डी को तो यहीं कट कर दो। सौर होते हैं, रेड टू ब्लू कन्वर्ट करते हैं, ये भी गलत है। Blue litmus to red. Right. Option C. Yes. Which of the following are present in the dilute aqueous solution of hydrochloric acid? A. Option A. H3O Option plus Cl minus. Yes. Dilute aqueous solution of HCl है भाई, HCl है तो H plus और Cl minus, और H plus हट जाके जो वाटर होगा एक्वस सॉल्यूशन H3O plus. तो H3O plus बना OH माइनस नहीं बनेगा, अनआयोनाइज्ड रह जाएगा, ये बात भी गलत है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। और आई एम टेलिंग यू, इस Option A. जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, वो बच्चे डेफिनेटली ये क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करते हैं। एंड यू नो दैट जहां H प्लस है वाटर में, वहां H3O प्लस है ही है, अनडाउटेबल। चलो आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। पहले मुझे बताओ कौन कहाँ पे कौन सी गलती है, क्योंकि हमें करेक्ट वाला निकालना है क्लोर एल्कली प्रोसेस का। ऑप्शन डी गलती है। ऑप्शन ए में आने से लिक्विड में ए में हाइड्रोजन आयंस बैलेंस नहीं है। ए में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है मैम ए में। और मैम सी में क्लोरीन और हाइड्रोजन को एक्वस लिखा हुआ है। अरे रुक जाओ, किसने बोला आयंस? बैलेंसिंग आयंस की होती है, बैलेंसिंग एटम्स की होती है? पहले ये बताओ। बैलेंसिंग एटम्स, तो यूज राइट एटम्स एट द राइट प्लेस। आपका इंटेंशन सही है, मुझे पता है, बट आपका वर्ड रॉन्ग जा रहा है, सामने वाले को नहीं पता होगा। जल्दी उठा बेटा। So NaCl plus H2O gives 2 NaOH plus Cl2 plus H2. हम इसमें NaCl को लिक्विड लिखा हुआ है। मैम सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी लिक्विड लिखा डाइल्यूट डायगोनल हाइड्रोक्साइड के अंदर लिक्विड लिखा हुआ है। हम सेकंड वाले पे H2 aqueous लिखा मैम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। हम ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी से मतलब नहीं है, मुझे एरर्स फाइंड आउट करके बताओ। सेकंड में एरर क्या है? H2 Second. Ma'am, को H2 aqueous has been लिखा है। written like H2 aqueous. H2 atoms are H2O there. aqueous. This should be liquid, this is gas, this is gas, right? And And option H2O C. aqueous Ma'am, है And direct. alternate it and is chlorine hydrogen or it aqueous होता है. Hydrogen gas. Then hydrogen gas aqueous है and direct. hydrogen को hydrogen aqueous लिखी हुई है. तो Correct liquid ही answer is होते D. हैं ना. Right, right. My And bad. Option D. This is liquid, this is correct. मैम yes. the H2 fourth one is एक्वस है. And H2 is also aqueous, but it is a gas. Yes. Yes. yes, ma'am. And Hydrogen is oxygen also a aqueous, gas. that is a gas. So NaCl aqueous है, सही है. Water liquid है, that is correct. NaOH aqueous है. Chlorine gas है. This is all correct. So physical state. Option D is the right answer. Option D. Option Match. Lactic acid, curd, acetic acid. जल्दी से अनम्यूट करके आंसर Vinegar. Vinegar. Ma'am, acetic acid vinegar. Ma'am, Citric acid vinegar. Lemon, oxalic acid. Tomato. Apple, Malic acid. Malic acid. malic acid. acid. Ma'am, formic Formic acid. acid. Right, right, right. Okay, where is Kriti? Kriti has asked one question. मुझे याद आया. She was asking me that day. Kriti, are you there? नहीं, I think she got disconnected. Na, I got a message. No talking. No talking. Who is this? अविरल आरव, कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, दोनों करेंगे. आंसर करो. बाकी सब अपने अपने नोटबुक में करो, नहीं किया हुआ तो. हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. आंसर करो जल्दी से. मैच द फॉलोइंग. प्लास्टर ऑफ पेरिस. जल्दी बताओ क्या है ये. आज नहीं बताया तो कल पिटाई करूंगी यहाँ. सेकंड करेक्ट. जिप्सम. Ma'am, the third. थर्ड है Baking करेक्ट. powder. Ma'am, C is the fourth. Are these two answering only? Let me check. Ma'am, C is the fourth. Fourth. Children, are you up to Arab? C का first. C का first. Bleaching powder is CaOH hold three. What is it? Vidhan. मैम फोर्थ. क्या बोलेंगे? Fourth. Chemical name Vidhan. Ma'am, Wait. D the first. What is its chemical name? Vidhan. हद हो गई. Ma'am, it is calcium oxychloride. Ma'am, may I? Calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Hydrogen oxychloride. हाइड्रोजन. आ रहा, पिटाई हो जाएगी बहुत जोर से. Sorry, calcium hydrogen. Ma'am, it Calcium is oxychloride. calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Calcium oxychloride. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सामने लिखा हुआ है. कैल्शियम O फॉर ऑक्सीक्लोराइड. अब तो बड़े हो गए हो, 10th में आ गए हो. स्लेट ब्लाइंड. Ma'am, 5. चलो आगे. What will be the action of the following substances on litmus paper? Dry HCl gas. No change. No change, no reaction. No change. Moist ammonia Red gas. to blue. Red to blue. Children, you can that now moistened ammonia gas is nothing but NH4OH. NH4OH. Lemon juice. Blue to red. Blue to red. Blue to red. मेरे फोन से ज्वाइन करो. मीटिंग को चेक करो कौन कौन नहीं है. मेरे फोन से मीटिंग आईडी भेजो.
Blue to red. Right. So this is red to blue. And lemon juice is acidic. So this is blue to red. Blue red. to red. Carbonated soft drinks. Ma'am, Blue to red. blue to red. Blue to red. So Red to red. Red to blue. Red Red to blue. Ma'am, red red to No, to no, red. no. Blue to red. Blue to Blue red. to red. blue to red. Blue to Blue red. to red. Soap red Ma'am, it solution is red red to to blue. blue. red to blue. Red to blue. Red to blue. Red to Red. blue. To blue. name the acid present in the hand. HCOH. Formic acid. Formic acid. Formic acid. Very good. Ma'am, HCOH, it is that is formic formic acid, acid. also known as methanoic. Methanoic acid. Ethanoic. Methanoic acid. फॉर्मूला हमने साथ में दे दिया, that HCOOH. is HCOH. HCOOH. Also give a common method to get relief from the discomfort caused Basic Applying baking baking soda. soda. Apply baking soda. By NaHCO3. look. अगर आप लिख रहे हो अप्लाइंग बेसिक सोडा तो मैम कट कर सकती है. You have to write applying a thick Calamine. Paste of baking soda. Calamine lotion. calamine. Calamine lotion. Calamine. This paste of baking soda लिखो. ड्राई बेकिंग सोडा कुछ नहीं करेगा उसके ऊपर. So you have to apply a paste of baking soda. And the other one is calamine solution. क्या कौन सा बेस होता है calamine solution में? जो बता देगा मान जाऊंगी, क्लास में बता चुकी हूँ. मैम क्या? Which base is present? Which base is present in calamine solution? Weak base. Baking powder. मैम मैं मैंने नाम पूछा है. वीक तो होगा तो कॉमन सेंस में Ma'am, zinc carbonate. ZnCO3. Carbonate. And zinc oxide. Ma'am, zinc carbonate. ZnCO3. ZnCO3. Zinc carbonate. Ma'am, zinc carbonate. What happens when nitric acid is added to eggshell? क्या होगा जब nitric acid add करोगे eggshell में? जल्दी बताओ. It will form CaNO3 whole 2s plus H2O plus CO2. Plus CO2. Is he right? Is Abhimanyu right? Yes, ma'am. Eggshell Yes, ma'am. Yes, मैंने बताया ma'am. बार-बार. CO2 gas is released. Calcium carbonate. Reaction लिखो. CO3 plus 2HNO3 Plus gives you HNO3 NO3 whole CaNO3 whole 2s plus H2O plus CO2. plus H2O plus CO2. CO2. Right. अच्छा मुझे बताओ ऑनेस्टली रिएक्शन के साथ इस आंसर को किसने इस क्वेश्चन को कैटर किया? Ma'am. भाई हमने रिएक्शन लिखी है. वेरी गुड. Ma'am. Very Ma'am, I have done it. very good. Those who have not written reaction, भाई write down reaction. कितनी बार बोला है केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन बात नहीं करनी है. रिएक्शन के साथ करो. A student prepared solution of an acid, a base in two separate beakers. उसने एक acid और एक base का दो separate solutions बनाए हैं. She forget to label the solution. ये हमने किया है. Ma'am, we can use various. I'm using ingredients like phenolphthalein, China rose, and turmeric. चाइना रोज तो मैंने नहीं करवाया. Who will tell me? कहाँ से लिख रहे हो ये आंसर्स? Is it cut copy paste? Have I told you about China rose? हम 7th में पढ़ा था China rose is an indicator. Are you sure? Yes, ma'am. I hope no one is copying anything. I hate this. I hate cheating and lies. A student prepared a solution of an acid and a base in two separate beakers. She forgot to label and litmus paper is sadly not available. Since both the solutions are colorless, how will she distinguish?
She will use Ma'am, phenolphthalein she can use indicator. indicators like methyl and orange, turmeric. Ma'am, turmeric, she and can also use phenolphthalein. turmeric. Yes, she might use turmeric for methyl PH oxide to plus Ma'am, again and phenolphthalein, phenolphthaleinols. red cabbage, turmeric. Can she use olfactory indicators? Yes, Yes, ma'am. vanilla. Ma'am, any indicator except for litmus paper. Any indicator. Very good. Very good. The perfect answer. Ma'am, in this we can also use red cabbage. She may use red cabbage. How will you distinguish between baking powder and washing soda? Baking powder. I write a chemical equation of both. Can I tell? बेटा केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे आप केमिकल फॉर्मूला बोलेंगे युवराज Sorry, ma'am. Chemical formula. केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर 2NaHCO3. NaHCO3. It gives Na2CO3 plus H2O plus CO2. दैट इज प्रिपरेशन वो बाद में बताएंगे आप दैट इज प्रिपरेशन सबसे पहले इनका केमिकल नेम लिखेंगे बेकिंग पाउडर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेकिंग सोडा सो बेकिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय Sodium hydrogen carbonate. प्लस Sodium hydrogen carbonate. क्या हमने इट्स नॉट सोडियम हाइड्रोजन आर यू टॉकिंग अबाउट बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर रीड क्वेश्चन केयरफुली रीड क्वेश्चन केयरफुली आपसे बेकिंग सोडा पूछा गया या बेकिंग पाउडर पूछा गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा यू आर here supposed to tell baking powder Na2CO3 dot 10H2O. that is washing soda that is washing NaCO3 plus tartaric acid. आप दोबारा बोलो आराध्या क्या बोल रहे हो NaHCO3 plus tartaric acid. yes baking powder is formed by Parul आप भी बोलो you wanted to speak something No, ma'am, I wanted to distinguish between baking powder and washing soda. so children are getting confused between baking powder and baking soda first पहले तो वो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए baking powder is not baking soda children baking powder is formed when we add tartaric acid to baking soda पहले तो वो लिखो और washing soda is sodium carbonate decahydrate फिर आप दोनों का प्रिपरेशन दे दो पहले इनका कॉम्पोजिशन दो पहला पॉइंट लिखो सब डिफरेंस लिखो कॉम्पोजिशन फर्स्ट बेस सेकंड फॉर्मेशन थर्ड वन इज यूजेस लिखो फिर आंसर करना मुझे जल्दी से Ma'am, the question says by heating. Yes, ma'am. Ma'am, the question says by heating. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it is written by heating. Ma'am, we have to distinguish them upon their decomposition reactions. Okay. We have to only Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, may I answer that? Ma'am, can I also I answer? miss these two words. Bolo Parul. Ma'am, when baking soda is heated, carbon dioxide is produced, and that carbon dioxide is like given to lime water, and then lime water turns milky. But this reaction won't happen with washing soda. This reaction won't happen with washing soda. Ma'am, can I tell of washing soda? बोलो आप भी बोलो पहले मैं आप सबको And when washing soda is heated, its water of crystallization is given out and it becomes an anhydrous salt. अच्छा who else here it is written baking powder children and you're giving reactions with baking soda
This is my cause of worry. लिखो, write down. I'm giving you answer. Write down. सबसे पहले आपको ये बताना होगा baking powder is a mixture of, लिखो, baking powder is a mixture of baking soda and tartaric acid. लिखिए, baking powder is a mixture of baking soda and tartaric acid. प्रांजल, आप लिख नहीं रहे हो? Baking powder is a mixture of baking soda and tartaric acid. Clearly, full stop के बाद लिखो, clearly. Baking soda is present in baking powder. Clearly, baking soda is present in baking powder. फिर लिखोगे, upon heating baking powder, the baking soda undergoes decomposition. Baking soda undergoes decomposition to release carbon dioxide gas. To release carbon dioxide gas. अब साथ में ये वाला रिएक्शन दो, NaHCO3, राइट? ये अब बेकिंग सोडा हो गया. अब आपने ऊपर स्टेट कर दिया है कि जब बेकिंग पाउडर को हीट करोगे तो डिकम्पोजिशन किसका होगा? बेकिंग सोडा का होगा. तो व्हाट विल यू गेट? Na2CO3 plus H2O plus CO2. Very good. Plus H2O plus CO2. Ma'am, where did I go wrong? You were saying baking soda directly. So your opening of the answer was not correct. First we have stated कि baking powder, baking soda और tartaric acid का mixture होता है. जब baking powder को heat करोगे तो उसमें जो baking soda present होगा उसमें decomposition होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. डिड यू टेल दिस कि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन होगा? नहीं ना. तो हमारा ओपनिंग इज गोइंग रॉन्ग, जिसकी वजह से मैम हमारे मार्क्स काट सकती है. बोलो. हाँ. अब नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. दैट इज वेरी मच क्लियर. तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.NH2O. Na2CO3.NH2. राइट. तो Na2CO3 3.NH2O. इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 plus 10H2O. Plus 10H2O. Very good. So are we clear? Yes, ma'am. तो थोड़ा सा this question was little puzzling for everyone. Do not confuse between baking powder and baking soda. The two are different. जब केक प्रिपेयर करते हो, बेकिंग करते हो, तो बेकिंग सोडा भी होता है और बेकिंग पाउडर भी होता है. दोनों चीजें होती हैं. युवराज, आंखें बाद में मटका लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं. Salt A commonly, next question. Salt A commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt B, which itself is used for removal of hardness of water. And gas C is evolved. The gas C when passed through lime water turns milky. You have to identify A, B and C. जल्दी बताओ. मैम A NaHCO3, B Na2CO3 और C CO2. C is carbon dioxide. Is it clear to everyone? We have a salt A जो बेकरी में यूज होता है. तो बेकरी में बेकिंग सोडा यूज होता है. तो दैट इज NaHCO3. अब आप इसको हीट कर रहे हो. अभी हमने इसको ऊपर वाला किया. आप इसको हीट कर रहे हो, आपको दूसरा सॉल्ट मिल रहा है B. तो ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट. राइट. ये हो गया आपका A. राइट. दिस इज A. दिस इज B.
right? Which is used for the removal of hardness of water. तो washing soda is used. Gas C is evolved. तो gas C कौन सी हो गई? कार्बन Carbon Carbon dioxide. dioxide. और उसमें ABC लेबल करो. It is very important to label ABC within the reaction itself. लिखो जल्दी से reaction and label it. आइडेंटिफाई ए बी सी नीचे लिख के ए रेफरेंस एंड जब ए बी सी लिखोगे तो फॉर्मूले के साथ नेम भी देना. ए इज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बी इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट. सी इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बिठाओ भी 10 मिनट को मैम 10 मिनट. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, next question. In one of the industrial processes used for manufacture of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम कौन बताने वाला है मुझे? NaOH. कॉमन नेम पूछा है मैंने. Caustic soda. Caustic कास्टिक सोडा. मैं बार बार पूछती हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे भूलते हैं. लिखो जब भूल रहे हो तो. मैंने कॉमन नेम पूछा है. कॉमन नेम भी पूछे जाते हैं. केमिकल नेम अलग होता है, कॉमन नेम अलग होता है. Who has joined with the name of Saloni Bhardwaj? Oh, ये तो मेरा ही है तक. Okay. Saloni is my boy. Okay. This is our Saloni. I forgot. Who is she? A gas X is formed by product. The gas X reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in chemical industry. So gas Y कौन सी होगी? Gas X कौन सी होगी? Which term? Cl2 chlorine gas. Chlorine gas. क्लोरीन गैस. क्या बात कर रहे हो यार? क्लोरीन गैस ही है. मैम क्लोरीन गैस ही होगी. नहीं, एक मिनट. द गैस एक्स रिएक्ट्स विद. अच्छा ठीक है. द गैस एक्स रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड वाई which is used as a bleaching powder, right? Lime water is CaOH whole. Yes. Right. That is chlorine gas. So chlorine gas मतलब calcium oxychloride. CaOCl2 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 plus H2O. बेटा दोनों रिएक्शन लिखेंगे. रिएक्शन क्या लिखेंगे जल्दी बताओ. 2NaCl plus 2H2O forms 2NaOH plus Cl2 plus H2. Second reaction is CaOH whole twice plus Cl2 forms CaOCl2. NaCl plus H2O gives you Gives 2NaOH plus Cl2 plus H2. plus Cl2 plus H2. 2. Right. अब सेकेंड रिएक्शन क्या होगी? CaOH whole twice Cl2 plus Cl2 gives CaOCl2. CaOCl2 plus H2O. वेरी गुड. अब इसमें लेबल करो जरा. ABC लेबल करो. ABC XY है. XY है मैम. X is Cl2. फर्स्ट में X is Cl2 क्लोरीन गैस और Y is CaCl2. ऑक्साइड क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर. Bleaching powder, calcium oxychloride, both are correct. 2 minutes. Last question. Children, this is the last question of the day. We'll find in the missing data. जल्दी बता दे जो. We have copper. मैम एसिड फर्स्ट में CuOH whole twice. CuSO4 फर्स्ट वाला HCl है. HCl.
CuOH whole CuOH मैम whole थर्ड twice. वाले में भी HCl है मैम थर्ड वन में भी HCl है। थर्ड वाले में भी HCl है HCl. मैम फोर्थ वाले मैम में फोर्थ में MDOH MDOH whole होल twice. ट्वाइस है MDOH होल ट्वाइस मैम फिफ्थ वाले में KOH and H2SO4. KOH and H2SO4 KOH and KOH and H2SO4 वाले में H2SO4 HNO3. Ma'am, last HNO3. मैम HNO3 खत्म होने का था या क्वेश्चन का था? क्लास खत्म होने का? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. So we left over with few question. ऐसे बीच में विंडो निकाल के मैं इसको फिनिश करूंगी. But next class will be solely dedicated for light chapter NCERT. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लाइट चैप्टर की NCERT करेंगे. काफी कवर कर लिया है मैंने.